ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सला वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा काञ्चीकलापरुचिरोल्लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारुकौस्तुभेन विराजिता कोटिमन्मथलावर्णो हरिचन्दनचर्चिता परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरा आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादया तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जयारावो रसपुष्टिर्लौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुःशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्योद्विलोकितो मया मूढा सटा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति यतो नृलोकेन नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अभौगविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुविनास्ति चान्यत् के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीनमार्गः। कुमारावुचु ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हिना पितृमातृदूषकास्तृष्णा कुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्रपापाशलछद्मकारिणा क्रूरापसाचायुर्नृदयाश्च ब्रह्मस्य पुष्टा विचारिणा सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापातिकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाहटेन परस्वपुष्टा मल्ला दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तिष्यामीतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वं बहुत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णासो धर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवापुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करा भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्दुले स्मृता सुवाक्य स्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चग्रकृतेषु कृपणा कलह प्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्योर्माणयोऽर्था कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकं पश्चात् धर्मा समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभो हिरण्यवासांसि देने दीनेभ्यो यक्षता सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो वृषम् एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने तृष्टो जातस्तडागं सम्पेयवान् पीत्वा जलं निःसरणस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थिता पुरा। यतिरुवाच कथं रोदसी विप्रत्वं काते चिन्ताबलीयसी वत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमृषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातया प्रजा दुःखेन शून्योऽयं प्राणस्त्यक्तुमिहागता दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनु सा बन्ध्या सर्वथा भवेति या मया रूपितो वृक्षासोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमितो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखी पीडितः तदा तस्य तेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरं मालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। यतिर्वाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तो समासाद्यते संसारवासनां शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधितो पुत्रो नैव च सन्तते सगरो दुःखं वापाङ्गा पुरा तथा मुञ्चात् कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वथा सुखं। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणस्तुदग्रे शोकमूर्छिता पुत्रादि सुखोहिनोऽयं सन्न्यासः शुष्के विगृहस्था सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्विता इति विप्रागृहं दृष्ट्वा प्रब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गता कष्टं निविधिलेख विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्यता दैवहतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि हर्थिनं किं वदाम्यहम्। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवानिदं भक्ष्य पत्न्यातं तथा पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रियाकारं तेन पुत्रोति निर्मला एवमुक्ता यो योगी विप्रस्तु गृहमागता पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणे कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोधा अहो चिन्तामोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षे फलभक्षेण गर्भासात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवात् घाटी बृजेत् ग्रामो पलायेत् गर्भिणी कथं सुखवन्निवसेत् गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मंदायां मयि सर्वस्वं नान्दा संहरे तदा सत्यशौचादिने दुराराध्या सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्षते
वंद्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मते एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेत्तैरितम् एकदा भगिनी तस्या तद्गृहं शिक्षा गता तदग्रे कथं सर्वं चिन्तयेयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन अनुजकर्वाणि किं साब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं सगर्भे गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतिर्यक्ष सते दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदा चरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतात् काल्यं सा नारी प्रसूता बालकं तदा अन्यजनको बालं रहस्य दुन्दुलिं ददौ तया च कथं भर्ते प्रसूता सुकुमर्भकालोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु भर्तुरग्रे विविधवाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वशुच प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामा कार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीतिं नाम मात्र प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते जातः साधेनु सुसुवीर्भकं सर्वांगसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागता भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगिता गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाकला स्नान शौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रहकर्ता च सौहस्तेन भोजनं चौरा सर्वजनद्वेषी पर भीष्म प्रदीपका लालनायार्भकान् धृत्वा सद्याकूपे निपातयत् हिंसका शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडका चाण्डाला विरतो नित्यं पाशस्ता सुसंगता तेन वेश्या कुसंगेन पित्रं वित्तं तुनासितम् एकदा पितरौ पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणा प्रोक्चर्धनहीनो रुरोधा बन्ध्यत्वं तु समासीनं पुत्रो दुःखदायका कुतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं विपोयत् प्राणः त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुता बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असाराकल संसारो दुःखरूपी विमोका सुता कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशं न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविना मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वनेता तत्त्वं वत्स विस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धा पङ्गुरां सटा कर्मणा पत्तो नूनं मामुद्धरदयानिधे गोकर्ण उवाच देहस्तिमान् सरुद्रेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिव सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं षडभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजत्सत्यं त्यजलोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जयिकां तृष्णामन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्ता सेवा कथारस्मो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनस्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीय स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच द्वारिद्युनद्यारिशिवा कुरूणां मैत्रेयमासेन मगाधबोधं छत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धा पप्रक्ष सौशील्यगुणा वितृप्तः। विदुरुवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वा निरुपारमं वा विन्देत भूयः तथैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद्धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय ये चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिश वर्त्मसम्ना संराधितो भगवान् येन पुंसां हृदय स्थितो यक्षति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवास्त्रिधीशः। यथा ससर्जाग्रीदं निरीया संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विदत्ते यथा पुनः स्वेखैदं निवेश्य सेते गुहायां स निवृत्य वृत्ति योगेश्वराधीश्वर एतदनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विदत्ते द्विजगोसुराणां चैमाय कर्माण्यवतारभेदै मनो न प्यत्यपि शृण्वतां नासु श्लोकमौल्यश्चरितामृतानि।
यस्तत्वेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् स लोकपालान् अचीक्लपद्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकाय भेदोऽधिकृता प्रतीता येन प्रजानामुतात्मकर्मरूपाविधानां च विधां विदत्त नारायणो विसृजात्मयोनिरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवान् वृतानि श्रुतानि मे व्यासमुखाद्वीक्षणम् अतृप्नुमच्छुल्लसुखावहानां तेषां मृते कृष्णकथामृतौघात् कस्त्रिप्नुयात्तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वा सूर्यभिरीड्यमानात् या कर्णनाड्यं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ते मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सकापिते भारतमहाकृष्ण यस्मिन् राम ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरे कथायां सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसा हरे पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्यमा सुधत्ते ताञ्छोच्च सोच्या न विदोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखा नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषामायुर्वृथावाद गतिर्स्मृतीनां तदस्य कौसारव शर्मधातुर्हरे कथामेव कथासारमुद्धृत्य पुष्पे पिवार्थबन्धो शिवायना कीर्तय तीर्थकीर्ते विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारा प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरा कीर्तयतानि मह्यं श्रीशुकवाच स एवं भगवान् पृष्ठाचत्रा कौसारभिर्मुनि पुंसां निःश्रेषार्थेन तमः बहुमान्यं मैत्रेयवा सात्पृष्टं तया साधु लोकां साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि छत्रबादरायणवीर्यजे गृहीतो नन्यभावेन यत्त्वया हरीश्वरा मानव्यशापात् भगवान् प्रजासंयमनो यमाचा भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायां जाता सत्वती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मता सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद् भगवान् वृजन् अथ ते भगवल्लीला योगमायोपृङ्गिता विश्वस्थित्युद्भवान् तार्ता वर्णयाम्यनुपूर्वशः भगवान् एक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभो आत्मेक्षानुगतावात्मानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा दृष्टा नापश्य दृश्यमे कराट मेने सन्तविमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सा वा एतत्सन्दृष्टो शक्तिः सत्सदात्मिका मायानां महाभागा एदं निर्ममे विभुकालवृत्त्या तु मायां गुणमय्या मधोक्षजा पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान् ततो भवन्महत्तत्त्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात् मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमोनुदः सोऽप्यंश गुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरा आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिश्रुक्षया महत्तत्वाद् विकुर्वाणाद् अहं तत्त्वं विजायत कार्यकारणकर्तात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैश्चतां सचेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद् विकुर्वाणान् मनोवैकारिकाद् भूतवैकारिकाश्चेदेवा अर्थाभिव्यञ्जनं यथा तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यथा खंलिङ्गमात्मना कालमायांस योगेन भगवद्वीक्षितं नभा नभसो नो श्रुतं स्पर्शं विकुर्वन् निर्ममे नीलम् अनिलोपि विकुर्वाणो नभसो रूपलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं विकुर्वत्परवीक्षितम् आधात्ताम्भोरसमयं कालमायांसयोगतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामाधात् कालमायांसयोगतः भूतानां नभ आदीनां यद्यद् भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गाद् यथासङ्ख्यं गुणान् विदु एते देवा कला विष्णु कालमायांसलिङ्गिना नानात्वात् सुक्रिया निशा प्रोचु प्राञ्जलियो विभुं देवा ऊचु नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायति योञ्जसोरु संसारदुःखं बहुरुक्षिपन्ति धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मल्लभन्ते भगवस्त्रवाङ्गिं छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश्छन्दासुपर्णैर्षयो वियुक्ते यस्यागमर्षो दशरिद्वराया पदं पदं तीर्थपदा प्रपन्ना यक्षद्या सुतवत्या च भक्त्या संसृज्यमाने हृदयवधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्यङ्गे सरोजपीठं विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदि स स्मृतं प्रयच्छत्यभयं सुपुंसां यस्यानुबन्धे सति देगे ममाह मित्यूढदुरागृहाणां पुंसां सुदूरं विशतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवान् पदाब्जं तान्वै सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसा परेश अथो न पश्यन्तिरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्यापानेन ते देवकथासुधाया प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये
वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरुत्कुण्ठधिष्ण्यं तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विसन्ति तेषां श्रमास्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोकस्य शिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ता सुविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते यावद्बलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं वरन्तो न मदन्त्यनूहा त्वं नासुराणामसंसान्वयानां कूटस्थाद्या पुरुषा पुराणा त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयो नवरेतस्तुजायां कविमादधेजः ततो वयं सत्प्रमुखाय दर्ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं नासु चक्षुपरिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे अनुगृहाणां जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायोन्मुक्ते वासुदेवाय षष्ठोऽध्याय ऋषिर्वाच इत्तासां सुशक्तीनां सतीनाम समेत्य सा प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरा कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रक्शक्तिमुरुक्रमात्रयोविंशत्तत्त्वानां गणं युगपदाविशत् सोनुपृष्ठो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सूक्ष्मं कर्म प्रबोधेन प्रवृद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणा प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्राभिरधिपूर्वं परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृगणा चुक्षोभान्योन्य मासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचराच हिरण्मयस्य पुरुषा सहस्रपरिवत्सरानाण्डकोचु वा साप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहिता स वै विसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् बिभभाजात्मनात्मानमेकदा दशदा त्रिधा एष हिसेत् सत्त्वानामात्मांसा परमात्मना आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मा साध्यैवच साधभूतेति त्रिधा विराट् प्राणो दशविधे एकदा हृदयेन च स्मरन् विसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजा विराजमतपस्वेन तेजसैषां विवृत्तये अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि निर्विद्यन्ते देवानां तानि मे गता शृणु तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांसेन वक्तव्यं यासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तालुवर्णो लोकपालो विशद्धरे जिह्वांसेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णुराभिशतां पदं घ्राणेनांसेन गन्धस्य प्रतिपत्र्यतो भवेत् निर्भिन्न क्षणे तुष्टा लोकपालो विशद्विभुचक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपत्र्यतो भवेत् निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशत्प्राणेनांसेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विभुसुर्दिशासूत्रेणांसेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विभुसुर्धिष्ण्यमोषधि अंशेन रोमभिकण्डुं यैरसौ प्रतिपद्यते मेढं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं कौपाविशतरेतसांसेन येना सावानन्दं प्रतिपद्यते गुणं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोके चाविशत् पावनांसेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रास्वर्पतिराविशत् वार्तयांसेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांसेन पुरुषो या प्राप्यं प्रपद्यते बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां भागेशो धिष्ण्यमाविशत् बोधेनांसेन बोधव्य प्रतिपत्तिरितो भवेत् हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमाधिष्ण्यमाविशत् मनसांसेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते आत्मानं चास्य निर्भिन्नं विमानो विशत्पदं कर्मणांसेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते सत्यं चास्य विनिर्भिन्नं महाधिष्ण्यमुपाविशत् चित्तेनांसेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते शेषणोस्य देवधरा पद्भ्यां कमनाभेरुपद्यत गुणानां मृत्यो येषु प्रतीयन्ते सुरादया आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रजा स्वभावेन पडयो ये चिता ननु तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिता उभयोरन्तरं व्योमये रुद्रपार्षदां गणां मुखतो वर्तत ब्रह्मपुरुषस्य कुरुद्वायस्तोन्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूद्ब्राह्मणो गुरु बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुवृता यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषा कण्टकक्षतात् विशो वर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्तिकरीर्विभोः वैश्यतदुद्भववार्तां नृणां या संवर्तयत् पद्भ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्यां जाता पुरुषशूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरियेते वर्णासु धर्मेण जन्ते स्वगुरुं हरिं श्रद्धात्मविशुद्धरतं यज्जाता स भृत्यभियेत क्षत्र भगवतो दैव कर्मात्मरूपिणा का श्रद्धादुपाकर्तुं योगमायाबलोदयं यथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरिमन्याभिधासतिम् एकान्तलाभं वत्सोनुपुंसां सुश्लोकमौलिर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिः रूपाकृतायां कथासुधायामुपसंप्रयोगं
आत्मनो वस्तो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया तो भगवतो माया युहाय नाम मोहिनी यस्वयं चात्म वर्तमात्मान वेद किमुता परे यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा चाहं चान्यमेदे वास्तस्मै भगवते नमः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीय स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः नमो भगवते वासुदेवाय सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुकवाचं ब्रुवाणं मैत्रेयं विद्युद्वैपायनं सुतो बुधा प्रीडयन्युभारत्या विदुरा प्रत्यभास्त विदुर्वाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याभिकारिणा लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाक्रिया क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यता स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यता अस्राक्षेत् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममाया तया संस्थापयत्तेतद्भूया प्रत्यपिधास्यति देशता कालसो योषावस्थाता सुतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सायुज्येताजया कथं भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेषु वस्थिता अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मविकुता एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नापरानुद विभो कस्मलं मानसं मा श्रीशुकवाच सहितं चोदिता सत्ता तत्त्वजिज्ञासुना मुनि प्रत्या भगवच्चित्तास्मयन्निव गतस्मया मैत्रेयवासेयं भगवतो मायायन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतबन्धनं यदर्थेन विना मुष्य पुंसामात्मविपर्या प्रतीयतुपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसा कम्पादिस्तत्कृतो गुणा दृश्यते सन्नपि दृष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैर्यः यदेन्द्रियो परामोथ दृष्ट्रात्मनि परेहरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृष्णसा अशेष संक्लेशमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे कुता पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा विदुर्वाच संक्षिन्ना संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति साद्वैतद्व्यार्थं विद्वन्नात्ममायावनं यनं हरे आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहि यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परं गता तावगो सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जना अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रति तस्यापि नात्मना तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे यस्सेव्या भगवता कूटस्थस्य मधुदितारतिरासो भवेत् तीव्रं पादयोर्व्यसनार्जना दुरापायल्पतपसा सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दना सृष्ट्वाग्रे महदादीने सविकार्याण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभु यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्गुरुबाहुकं यत्र विश्वे लोका सविकासं समासते यस्मिन् दशविधा प्राणासेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत्तये ऋतो यतो वर्णास् तद्विभूतिर्वदस्वना यत्र पुत्रश्च पौत्रश्च नृभिः गोत्रजय प्रजा विचित्रा कृतय आसन् या विरिदं ततं प्रजापतीनां च पतिश्च क्लिपे कान् प्रजापतीन् सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनोन्मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचरितानि च उपर्यदश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजा सते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यङ्मानुदेवानां सरीसृप पतत्रिणां वदना सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेद द्विजोद्भिदां गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सहिता श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमम् वर्णाश्रम विभागाच रूपशील स्वभावता ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पदा प्रभु निष्कर्म च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत् स्मृतं पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोम निवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतिर्गुणकर्मजा धर्मार्थिकां मोक्षाणां निमित्तान्य विरोधता वार्ताया दण्डितेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धश्च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां काला वैभव संस्थितिं दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयो फलं प्रभा सस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंसा उतापदी येन वा भगवान् तुष्य धर्म योनिर्जनार्दना संप्रसीदति वा येषामेतदाख्याय चानगानुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमानां पृष्ठमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सला तत्त्वानां भगवतेषां कद्धा प्रीतिसङ्क्रमात् तत्रेमं क उपाशीरन् क उष्विदनुसेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नयि गमं यत्तद्गुरुशिष्यप्रयोजनं निमित्तानि च तस्य प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः सुतो ज्ञानं कुता पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान्मे पृच्छता प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया ब्रूहिमेज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः
सर्वे वेदास्य यज्ञास्य तपोदानानि चानघ जीवा भयप्रधानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीशुकुवाच स इत्थमा पृष्ठपुराणकल्पाकुरु प्रधानेन मुनिप्रधाना प्रवृद्ध हर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रसन्निवाह। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे सप्तमोऽध्यायो भुगते वासुदेवाथाष्टमः। मैत्रेय उवाच सतसेवनीयो बत पूर्वंसो यल्लोकपालो भगवत्प्रधाना बभूविथे हाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणं सोऽहं नृणां शल्यसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसेन मुर्म्यां भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सवस्तत्त्वमता परस्य कुमारमुख्या मुनियोन्पृच्छन् स्वमेव दृष्टिं बहुमानयन्तं युं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीशद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय स्वरधुन्युदार्द्रैः स्वजटाकलापैरुपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पद्मं यदर्चन् तैराजकन्या सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्था मुहुर्गृह्णन्तो वत्सानुरागस्खलत्पदे नासिकृतानि तज्ज्ञा किरीटसाहस्रमणिप्रवेग प्रद्योति तोद्दामफणासहस्रं प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तधर्माभिरितायतेन सनत्कुमाराय स च पृष्ठा साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायनापारमहंसमुख्यविवक्षमाणो भगवद्विभूतो जगादिशोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायात् बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं द्वित्तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाहृतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्र्यामीलितदृङ्निमीलित इन्द्रतल्पे दिशानेका कृतक्षणा स्वात्मरावनिर्या सोन्ता शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मा कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणा उवाच तस्मिन् शल्यत्पदेशे यथा नलो दारुणिकरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु सुपंस्वयोदीरिति या सुशक्त्या कालाख्या सादिति कर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् दृश्ये सुदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेरन्तर्गतोऽर्थो रसातनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्यासूंश्च तदा विद्यतनाभिदेशात् स पद्मकोशात् स सोदितिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सल्लं विशालं विद्योत यन्नरकैवात्मयोनि तल्लोकपद्मसु एव विष्णु प्राविविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति शोभो तस्यां स चाम्भोरुह कर्णिकायामवस्थितो लोकमुखमपश्यमाना परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्मादुगान्तस्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमु लोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः क एष योषा वहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सो अस्ति यदस्तादि किञ्चनैतदधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यं स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीविरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्वस्तदविन्दताजः तमस्य पारे विद्युता स्वर्गं विचिन्वतो भूत्सुमास्त्रनेमि यो देवाजं भयमीरयाणा परीक्षिणोत्यायुरुजस्य हेति ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामा सुधिष्ण्यमासाद्य पुनः सुदेहः शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो निशीददारूढसमाधियोगा कालेन सोजा पुरुषायुषाभिः प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधा स्वयं तदन्तर्हृदये येव भातमपश्यता पश्यति यन्न पूर्वं मृडालगौरायत शेषभ भोगपर्यंक एकं पुरुषं शयानं फणातपत्रायुतमूर्धनरत्नद्युभिर्हतध्वान्तयुगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं मरितोपलाद्रय सन्ध्याभ्र निवेरुरुक्ममूर्ध्ना रत्नोदधारौषधी सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रे आयामतो विस्तरता स्वमानदेहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणान् सुखानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहं पुंसां सुकामाय वियुक्तमार्गौरभ्यर्च्यतां कामदुगाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्त्यरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन सोडायितेन धरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रा कदम्ब किंजल कपिसंगवाससा सुलंकृतं मे कलया नितंबे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेन परार्घ केयूरमणिप्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्रशाकम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगै रधिवीत वल्सं चराचरौको भगवन् महेन्द्र महेन्द्र बन्धुं सलिलोपगूढं किरीटसाहस्रैरण्ड शृङ्गमाविर्भवत् कौस्तुभ रत्नगर्भं निवीतमाम्नाय
मधुव्रतश्रिया सुकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुवायुवग्नं गमं त्रिधाम परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदं तर्ह्येव तन्नाभिसरा सरोजमात्मानमम्बा सुसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नाता परमलोकविसर्गदृष्टिः सकर्मबीजं रसोपरक्ता प्रजा शुश्रक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तौद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यमव्यक्तवर्त्मन्यविवेशितात्मा। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धेष्टमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मे सुचिरान्ननुदेयभाजं न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यस्तदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन सस्वन्निवृत्ततमसा सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारसतैकबीजं यन्नाभिपद्मभुवनादहमाविरासं नाथा परं यद्भवता स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्यानेश्वनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते विधेम तुभ्यं यो नादृतो नरकभाग्भिर्षत्प्रसङ्गये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्ता गृहीतचरणापर्या च तेषां नापैशिनाथहृदयाम्बुरुहात्स्वपुंसां तावद्भयं द्रविणगेहसृहन्निमित्तं शोकास्प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभा तावन्ममेत्सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्नते घ्रिमभयं प्रवृणीतलोका दैवेन ते यतधियो भवता प्रसङ्गा सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रिया ये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवायदीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि सस्वच्छुत्रधातु भिरिमामुहुर्दमाना शीतोष्णवातवर्षैरितरेतरा च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मनोरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मने इन्द्रियार्थमायाबलं भगवतो जनैः पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिविम्बति क्रियार्था आन्यापृतार्थकरणान्निशयाना मनोरथधिया क्षणभग्ननिद्रा दैवाहतार्थरचना ऋषियोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा ये संसरन्ति तं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्य श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्त्वपो प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीद तथोपचितोपचारैराराधिता सुरगणैरधिवृद्धकामः यत्सर्वभूतदया सदलभ्ययैको नानाजनेषु वैताश्रुदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्या च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पिता कर्हिचिद्ध्रियते न यत्र सत्स्वरूपमहसैव दीपितभेदमोहाय बोधधिष्णाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चक्रिमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मसमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ये वा अहं च गिरिशश्च विभूषोऽयं च स्थित्युद्भवप्रलये तव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपाद्वबृद एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरता कुशले प्रमत्ता कर्मण्यं तद्विते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् जीवितासां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्धजिष्ण्यमध्यासिता सकल्लोकनमस्कृतं यत् तेपे तपोबौसवो वरु रुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यं तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनिस्वात्मेक्षयात्मकृतसेतु परीप्सया यः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाजठरी कृतलोकयात्रा अन्तर्जलैकसी पुष्परसानुकूलां भीमोर्मि मालिनीजनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तु उदरस्थभवाय योगनिद्रावसान विकसन्नलिनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां हृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृड्यते भगवान् भगेन तेनैव ते दृशमनुस्पृशताद्यथाहं सृक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणितप्रियोऽसौ।
एवं एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् सविक्रमिदं श्रितोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मसमलं चेताभिजिह्वां नापि हृदादे सतो वशीयस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमा समनन्तशक्तिरूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरि शिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गासु सावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माद्या गिरापनयतात् पुरुषा पुराणा मैत्रेवाच स्वसंभवं निशाम्यैवं तपोविद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचास्तुत्वा विररामः सखिन्नवत् अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदना विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यति कराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मना परिखिद्यता तमाह गाधया वाचा कस्मलं समयन्निभ श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रिं सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितं ह्यग्रेयन्मां प्रार्थयतो भवेत् भूयस्त्वं तपातिष्ठ विद्यां च विमदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पाभृतान् तत आत्मन्लोके च भक्तियुक्ता समाहिता दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकास्त्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षेति मां लोको जय्यात्तर्ह्यैव कस्मलं यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयस्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं रक्षति नानाकर्मितानेन प्रजावल्भिः शिसृक्षतानात्मा वशी दत्त्यस्मिस्ते वर्षीयान्मदनुग्रह ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापी यास्त्वां रजोगुणा यन्मनोमयि निर्विद्धं प्रजा संसृजितोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो वही नालेन शल्ये मूलं पुष्करस्य विचिन्विता यच्च कर्थांगमस्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा सा ये स मदनुग्रह प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयक्षया तौ शेर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णन य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजे तस्यात् सम्प्रसीदेयं सर्वकाम वरेश्वरापूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनां धाता प्रेष्ठा सन् प्रेषामपि यतो मयि रतिं कुर्याद्देहाद्दिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना प्रजा सृजयिता पूर्वं याश्च मय्यनुसेरते मैत्रिवा तस्मा एवं जगत्सृष्टे प्रधानः पुरुषेश्वर व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्चनाभस्तिरो दधे जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः भगवते वासुदेवाय दशमोऽध्यायः विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजास्य कदादयकिर्मान सर्वो ये च मे भगवान् तृष्टा त्वयार्था बहुवित्तमा तान् वेदस्यानुपूर्वेण न छिन्दिनः सर्वसंस्यान् श्रुत्वाच एवं संचोदितेन चत्रा कौसार्वो मुनिप्रीता प्रत्यातान् प्रश्नान् हृदिस्था नत भार्गवमैत्री उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षतं तपा आत्मन्यात्मानमावेश्य यदा भगवान् रजा तद्विलुक्याब्जसम्भूतो वायुना यद्धिष्ठितः मम्भश्च तत्कालः कृतवीर्येण कम्पितं तपसा हेदमानेन विद्या चात्मसंस्थया विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद्वायुं साम्बसा तद्विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्यचिन्तयत् पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदिता एकं व्यभाङ् छे दुर्धा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा एतावान् जीवलोकस्य संस्था वेदा समाहर्ता धर्मस्य निमित्तस्य विपाका परमेष्ठ्यस विदुर्वाच दातवरूपशरीरद्भुतकर्मणा कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मण्यथा वर्णयना प्रभु मैत्रीवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठिता पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजद् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमाया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना ते दानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु या कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रीतिसंक्रमा आद्यस्तो महता सर्गो गुणवैषम्यमात्मना द्वितीयस्त्वमहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदया भूत्सर्ग तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्था इन्द्रिया सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मका वैकारिको देवसर्गा पंचको यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्तद्बुद्धिकृता प्रभो षड्मे प्राकृता सर्गा वैकृता नपि मे शृणो रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसा सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्तु तस्थु सांशयः वनस्पत्योषधी लता तुक्सारा विरुधो द्रुमा उत्स्रोतस्तमा प्राया अंतस्पर्शा विशेषिणा
चामष्टमा सर्ग सोष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरि तमसो ग्रहणज्ञा हृद्यवेदिना गौरजो महिषा कृष्णा शुक्रो यवो गौरजो महिषा कृष्णा शुक्रो गौरुरु दुष्पा पशुवश्चे में अविरुष्टश्च सत्तमा खरुस्वतरो गौरा सर्वश्चमरी तथा एते चैक सपा छत्ता शृणु पंच नखान पशून स्वसृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारा सत्सल्लकौ सिंहा कपिर्गजा कूर्मो गोधा च मकरादया कंक गृध्रवटश्चेन भासभल्लुकवर्णिना हंससारस चक्रावकालकोलुकादयः खगा अरवाक् स्रोतस्तु नवमा छत्तरेकविधो नृणां रजोधिका कर्मपरा दुःखे च सुखमानिना वैकृतास्त्र एवैते देवसर्गश्च सप्तमा वैकारिकस्तु या प्रोक्ता कौमारस्तु भयात्मका देवसर्गाश्चाष्टविधो विबुधा पितुरोऽसुरा गन्धर्वाप्सरसा सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणा भूतप्रेतपिशाचा च विद्याध्रा किन्नरादया दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वसृता अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजा प्लुता सृष्टा कल्पादिस्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीय स्कन्धे दशमोऽध्यायो भुगते वासुदेवाय तैकादशोऽध्याय मैत्रीवाच चर्मासद्विशेषाणाम् अनेको संयुता सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः सतैव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान् विशेषो निरन्तरा एवं कालोप्यनुमिता सौक्ष्म्यस्थौल्ये च सत्तमः संस्थान भुक्ता भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभो सकाला परमाणुर्वयो भुंक्ते परमाणुतां सतो विशेष भुग्यस्तु सकाला परममान अणुर्द्वौ परमाणु स्यात्र श्रेणुत्रय स्मृता जालार्करस्म्यवगता खमेवानुपतन्नगात त्रिश्रेणुत्रिकं भुंक्ते या कालः स त्रुटिस्मृतः शतभागस्तु वेदा त्रिभिस्तु लवा स्मृता निमेषस्त्रिलवोगेय आम्नातस्ते त्रयाक्षणा क्षणान् पंचविदु काष्ठां लघुता दश पंच च लघून् वै समाम्नाता दश पंच च नाडिका ते द्वे मुहूर्ता प्रहरा सड्यामा सप्तवा नृणां द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमासैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलाप्लुतं यामाश्चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्षा पंचदशानि शुक्ला कृष्णश्च मानद तयो समुच्चयो मासा पितॄणां तदहर्निशं द्वौ तावृतौ षडे यनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहने प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृता संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितं गृहर्क्षतारा चक्रस्थः परमाणुवादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभो संवत्सरा परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभास्यते या सृज्यशक्तिमुरुधो स्वयं स्वशक्त्या पुंसो भ्रमा यदि विधावति भूतभेदा कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वस्तस्मै बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय। विदुर्वाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुपरिमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पात् बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरायोगराध्येन चक्षुषा। मैत्रीवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेत् चतुर्युगं दिव्यर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं चत्वारि त्रीणि ते द्वे चैकं कृतादिशताक्रमं साङ्ख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्यासयोरन्तरेण यः कालः सत्सङ्ख्योत्तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेण व्यतिपादेन वर्धता त्रिलोक्यायुगसहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनं तावत्तेव निशाता तयन्निमीलति विश्वसृक् निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतः मन्नून भुञ्जश्चतुर्दश संसं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकामेकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मन्वस्तद्वंशान् ऋषयासुरा भवन्ति चैव युगपत्सु देशाश्चानुये च तान् एष दैनन्दिना सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तना तिर्यज्ञपितृदेवानां सम्भो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बृहत्सत्त्वं सुमूर्तभिः मन्वादिभिः हृदं विश्वमवत्युदितपौरुषा तमोमात्र
नेत्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमा कालेनानुगता शेष आस्ते तुष्टिं दिना ते तमेवान् न पिधीयन्ते लोका भूरादयाश्रया निशा या मनुवृत्तायां निर्मुक्त शशि भास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानायां सत्या संकर्षणाग्ना यान्तुष्मणा महारलोका जन्म भृग्वादयोर्दिता तावत् त्रिभुवनं सद्या कल्पान्तरिधितसिन्धवा प्लावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवाते ऋतोर्मयः अन्तः स तस्मिन् शल्य आस्ते नन्तासनो हरियोगनिद्रानिमि लाक्षास्तूयमानो जनालये एवं विधैरहोरात्रैकाल गत्योपलक्षितै अपक्षितिमिवास्यापि परमायुर्वया शतं यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमविधीयते पूर्वापरार्धोपक्रान्तो य परोद्य प्रवर्तते पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान्भूतकल्पो यत्राभवत् ब्रह्म शब्दब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पोऽभूत् यं पाद्ममविचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम् अयं तु कल्पो द्वितीयस्यापि भारत भारा इति विख्यातो यत्रास्य सुकरो हरिकालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर्जगदात्मना कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरा नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाममानिनां विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृता आण्डकोशो वैरयं 50 कोटिविस्तृता दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टा परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिषु यण्डराशया तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णुर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः द्वादशोऽध्यायः मैत्री उवाच इत्यवर्णिता चता कालाख्या परमात्मना महिमा वेदगर्भोत यथा स्राक्षिन्निबोध मे ससर्जा ग्रेन्दता मिश्र मतता मिश्रमाधिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तया दृष्ट्वा पापेशीं सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यत भगवद् ध्यानपूतेन मनुष्यान्यां ततो सृज सनकं च सनन्दं च सनातनमतात्मौ सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानूर्ध्वरेतसा तान् विवासेषु गोपुत्रान् प्रजा सृजत्पुत्रका तैन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपराणाः सुवध्याता सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषयं जातं नियन्तुमुपचक्रमे धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रूर्मध्यात् प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्यो कुमारो नीललोहिता सवैर्देवानां पूर्वजो भगवान् भवान् नामानि कुर्मे दाता स्थानानि च जगद्गुरु इत्यस्य वचापात्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते यद्रोधि सुरश्रेष्ठ सोद्वेगयो बालका ततस्त्वामविधास्यन्ति नाम्ना रुद्रेति प्रजा हृदिन्द्रियाण्यसूर्व्योम वायुरग्निर्जलं महि सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे मन्युर्मनुर्महिनसो महांशुवृतध्वजा उग्रेता भवाकालो वामदेवो धृतव्रता धीर्वृत्तिरुष्णोमा च युत्सर्पिरिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणि रुद्रते स्त्रिया ग्रहणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिसृज प्रजा भवि प्रजानामसि यत्पतेः इत्यादिष्टा स गुरुणा भगवान् नीललोहिता सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्म समा प्रजा रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताग्रस्तां जगत् निशाम्यासंख्यसो यूथान् प्रजापतिर्सङ्कतलं प्रजाभिः श्रेष्ठाभिरीदृशिभिः सुरोत्तमा मया सह दहन्तिभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः तपातिष्ठभद्रं ते सर्वभूतसुखाभं तपसैविता पूर्वं श्रेष्ठाभिस्मिदं भवान् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तः मदोक्षजं सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्। मैत्रीवाच एवमात्मा भुवादिष्टा परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् अथा विद्यायता सर्गं दशपुत्रा प्रजगिरे भगवञ्शक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवा मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्या पुलः क्रतुः भृगुवशिष्ठो दक्षश्च दस्मस्तत्र नारदा उत्सङ्गा नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयं भुवा प्राणाद्वशिष्ठा संजातो भृगुस्त्वचिकरात् कृतो पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्या कर्णयोरिषि अंगिरा मुखतो क्षणोत्रिर्मरीचिर्मनसो भवत् धर्मास्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणा स्वयं धर्मा पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोकभयङ्करा यदि कामो भूभुवा क्रोधो लोभश्चाधरदक्षदात् आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढा निरतिपायुरगाश्रया
छायाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापति प्रभो मनसो देयतश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत्वाचं द्वैतरं तन्यं स्वयंभूर्हरतीं मना अकामं चकमे छत्ता सकामा इति नाश्रुतं तं धर्मे कृत मतिं विलोक्य पितरं सुता मरीचिमुख्या मुनियो विस्रम्भात् प्रत्यबोधयन् नैतत्पूर्वकृतं त्वद्दे न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं द्वैतरं गच्छेरनिगृह्याङ्गजं विप्रभो तेजीयसामप्रिहेतन्न सश्लोक्यं जगद्गुरु यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकाक्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिता आत्मत्वं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति शैत्यं गुणतापुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिं प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा तां दिशो जगृहुर्घोरां नियारं यद्विदुस्तमः कदाचिद्ध्यायता सृष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात् कथं संक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा चातुरोतं कर्मतन्त्रमुपवेदनयैषा धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तया विदुर्वाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन्मुखतो सृजत् यद् यद् येनासृजद्देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन मैत्रीवाच ऋग्यजो सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्जास्तुतित्वं प्रायश्चित्तं विधात् क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मना स्थापत्यं चासृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुख इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरा सर्वेभ्य एव वक्तृभ्यासस्य सर्वदर्शना षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरुष्यग्नुष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवं विद्यादानं तपा सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमाश्च यथासंख्य मसृजत् स वृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चातुर्बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शिलोञ्च इति वै गृहे वैखानसा वालखिल्यौ दुम्बराफेन पावने न्यासे कुटीचका पूर्वं बहुधो हंसनिष्क्रियौ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृत यश्चासन् प्रणवो यस्य दौरता तयोस्नि गासील्लोमभ्यो गायत्री च तुचो विभो त्रिष्टुं मांसात् स्नुतो नुष्टुप जगत अस्थिनः प्रजापते मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवति स्पर्शस्तस्या भवज्जीवा स्वरोदेह उदारता ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तस्था बलमात्मना स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात्मना परा ब्रह्मावभाति वित्तो नानाशक्तिबृंहिता ततो परामुपादाय ससर्गाय मनो ददे ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतं ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमे तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न एदन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्त कृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपमभूद्वेदा यत्कायमभिचक्षते ताभ्यां रूपे विभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसो भून्मनु स्वायंभुवासुरा स्त्रिया शिक्षतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मना तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हेदां बभूविरे स चापि शतरूपायां पंचापत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रा कन्याश्च भारता कुत्रदेवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तमाकुतिं रुचे प्रादात् कर्दमायतु मध्यमां दक्षायादात् प्रसूतिं च यथा पूरितं जगत् जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्यवाचं वदतु मुने पुण्यतमा नृप भूयापप्रच कौरव्य वासुदेव कथाधृता विदुर्वाच स वै स्वाम्भुवा सम्राट प्रिया पुत्र स्वयंभुवा प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षे राधिराजस्तम ब्रूहि मे शब्ददानस्य विश्वसेनाश्रयो वैसौ सुरदस्य पुंसां सुरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोर्था यत्तद्गुणानुसरणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु येषां श्रीशुकवाचिति ब्रुवाणं विद्रुं विनीतं सहस्र शेषचरणोपधानं प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रीवाच दासो भार्या साकं जाता स्वांभुवो मनो प्राञ्जलि प्रतश्चेदं वेदकर्म भासत त्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता तापिना प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विधे नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत् कृत्वेयसो विश्वगमुत्र च भविद्गति ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति ताद्वां चितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा साधिमेत्यात्मनार्पितं एतावत् त्यात्मजैर्वीर्यकार्या ह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरे स तुमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः
उत्पाद्य सासधर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम यज परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षा नृप भगवान ते प्रजाभर्तूर्षि के सूनुतुष्यति येषां न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दना तेषां श्रमो पार्थस्यदात्मा नादृता सम्मनुर्वाचा देशां भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं तुहानुजानीहे प्रजानां मम च प्रभो यदोका सर्वसत्तानां मही मग्नामहं वसि यस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयतां मैत्रीवाच परमेष्ठी तुपां मध्ये तथा सन्नाम वीक्षगां कथमेनां समुन्यस्य इति दध्यौ धिया चिरम् शरतो मे चित्रवार्भिप्लाव्यमाना रसां गता तात्रकमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः यस्यामृदया दासं सहिसो विदधातु मे इत्यविद्या यतो नासा विवरात् सहसा नगवरातोको निरगाद अंगुष्ठ परिमाणका तस्याभिपश्यता खस्ता छड़ेन किल भारत गजमात्रा प्रवृदे तदद्भुतमभून्महत मरीच प्रमुखैर्विपय कुमारे मनुनासा दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा किमेतत्सौकरभ्याजं सत्नो दिव्यमवस्थितं ये अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिश्रितं दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरोमात्रा क्षणात् गण्डशिलासमा अविशुद्भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मना इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणा सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभा ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्ताश्च द्विजोत्तमान् सुगर्जितेन ककुभा प्रतिस्वनयता विभो निशम्यते गर्गर्तं सुखेद क्षयिष्णु मायामय शूकरस्य जनस्तपा सत्यनिवासी नस्ते त्रिभिः पवित्रे मुनिर्गृणस्म तेषां सतां वेदवितान ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो बुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उक्षिप्त बाला खचरा कठोरा सटा विधुन्वन खर्रोम सत्तत खुराहताभ्रास्य दृष्ट इच्छा ज्योतिर्भवासे भगवान महेंद्र ग्रहणेन प्रतिभा पद्म विजयग्रहण क्रीडो क्रोडापदेशा स्वयमध्वरांगा कराल दृष्टोपकराल दृग्भ्यामुद्वीक्ष विप्राण गृणतो विशतकं स वज्रकूटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षिस्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्तश्चुक्रोशि यज्ञेश्वर पाहिमेति कुरै छुरप प्रैर्दर्यस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायां ददर्श गां तत्र सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त स्वदृष्टयो धृतमहिं निमग्नां स उत्थिता संरुचेरसाया तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनावसन्दीपिततीव्रमन्यु जघानरुन्धान् मसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन् तमाल नीलं सितदन्तकोट्याक्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजिलीलेयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलियोनुवाकैर्विरिञ्च मुख्या उपतस्थुरी संऋषय ऊचूजितं जितं ते जिते यज्ञभावं त्रयं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्ते सुनीलुरद्धुरास तस्मै नमाकारणं सुकरायते रूपं तवैतन्नं तद्दुष्कृतात्मनां दुर्सनं देवयदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचिवर्धिरोमस्वाज्यं दृशित्वं घृश्चातुर्होत्रं सुक्तुण्ड आसे श्रुव ईशनास्योरिडो दरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशिस्त्रमाश्रय गसने गृहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रं दीक्षानुजन्मोपसदा शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीय दृष्टा जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं कृतो सभ्यावसस्थ्यं चितयो सबोहिते सोमस्तुरेता सवनान्यवस्थिता संस्था विभेदास्तव देवधातवा सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्थं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टबन्धना नमो नमस्ते किल मंत्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः दृष्टाग्रकोट्या भगमस्त्वया धृता विराजते भूधरभूषभूधरा यथा वनान्ये सरतोदता धृता मतं गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दत्ता धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमा संस्थापयिनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां सुतेजोऽग्निमिवारणावधा कः श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभोरसां गताया भुव उद्विबर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो मायेदं सृजसेति विस्मयं विधुन्वता वेदवयं निजं वपुर्जनस्तपा सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्
विमृज्यमाना वृषमीश पाविता स वैवत भ्रष्टमतिस्तवैषते य कर्मणां पारमपारकर्मणा यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेशम्। मैत्रेयवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्तविता वनिं सैत्थं भगवानुर्विं विश्वक्सेना प्रजापतिर्साया लीलयो नीतामप्सुन्यस्य ययो हरि य एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिना शृण्वेत भक्ता श्रवेत विवोचतिं जनार्दनोऽस्यासुहृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताविरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशया स्वयं विदत्ते स्वगतिं परापरां को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापामहो विरज्येत विना नरेतरम्। ओं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे वारापरादुर्भावान् वर्णने त्रयोदशा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय चतुर्दशा। श्रीशुकवाच निशम्य कौसार विणोपवर्णितां हरे कथां कारणशूक्रात्मना पुनः सपप्रक्षतमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतभृता। विदुरुवाच तेनैव ते मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तना दत्तो हिरण्याक्षो इत्यनुशुश्रुं तस्य चोद्धरता चौणीं स्वदृष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मादेतोरभून्मृधा। मैत्रेयवाच साधुवीरितया पृष्ठमुतार कथां हरि यत्त्वं पृच्छति मर्त्यानां योत्तानपदा पुत्रं मुनिना गीतयार्भका मृत्युकृत्यमूर्ध्यङ्घ्रिमारुरोह हरे पदम् अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णिता पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामन पृक्षतां दितिर्दाक्षायणे क्षत्रमारीच्यं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचक्मे सन्ध्यायां रक्षयार्दिता इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनमग्न्यगारे समाहितं। दितिरुवाच एषमात् त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तसरासना धुनोति दीनां विक्रम्य रम्भा म्युमतङ्गजा तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्या युङ्क्तामनुग्रहं भर्तर्याप्तोरुमानायां लोकानाभिशते यशा पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननुजायते पुरा पिता नो भगवान् दक्षो द्वित्रिवत्सला कम्रणीति वरं वत्सा इत्यपृच्छत् न पृथक्। सा विदित्वात्मजानां नो भावं सन्तानभावनः त्रयोदशा ददातासां यास्ते शीलमनुव्रतात् मे कुरु कल्याणकामं कञ्जविलोचनम् आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोघं हि महीयसि इति तां वीरमारीचा बहुभाषणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलाम् एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदीक्षसि तस्या कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकीयता सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्तेति जलयानैर्यथार्णवं यमाहुरात्मनो हृदं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमाश्चरति विज्वरा यामाश्रितेन्द्रियारातिर्दुर्जया नितराश्रमै भयं जयेमे हेलाभिर्दस्युन्दुर्गपतिर्यथा न वयं प्रभुस्तां त्वामनुकर्तुं ग्रहेश्वरी अप्यायुषावाकार्षिणे ये चान्ये गुणगृध्नवः अथापि काम्येतं ते प्रजातैः करवाण्यलं यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि एतस्यां साधुसन्ध्यायां भगवान् भूतभावना परितो भूतपरसद्भिर्वृषेणाटति भूतराट् श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्र विकीर्ण विद्युतजटाकलापा भस्मावगुण्ठा मलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके सृजना परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्य वयं व्रतयच्चरणापविद्धा मासास्महे जाम्बत भुक्तभोगां यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृणन्त विद्यापटलं विवित्सवा निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यस्वयं पिशाचचर्यामचरद्गते सतां हसन्ति यस्याचरितं च दुर्भगा स्वात्मनरतस्या विदुषा समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपने सुभोजनं स्वात्मतयोपलालितं ब्रह्मादेव यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च मायां याज्ञाकारी तस्य पिशाचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनं। मैत्रेयवाच शैवं संविदिते भर्ता मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्रावासो ब्रह्मर्षैर्वृषलीव गतत्रपा सा विदित्वात् भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टा रहसि तयाथोपविवेशः अथोपस्पृश्यशल्यं प्राणानायम्यवाग्यतः ध्यायन् जजाभिर्जं ब्रह्मज्योतिः दितिस्तु वीरता तेन कर्मावध्येन भारता उपसंगम्य विप्रसे मधो
मुख्यव्यभासत दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो बधित रुद्रापतिर्भूतानां यस्या करवमंहसं नमो रुद्राय महते देवो देवायोग्राय मेढुषे शिवाय नस्तदण्डाय धृदण्डाय मन्नवे सना प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रह व्याधस्याप्यनुकम्यानां स्त्रीणां देवा सती पति मैत्रिवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्या मासासानां प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्या नेमो भार्यामः प्रजापति कश्यपुवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मौहूर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात् भविष्यतस्तवा अभद्रा भद्रे जाठराधमौ लोकांसपालास्त्रीश्चण्डीमुराक्रन्दयिष्यता प्राणिनां मन्यमानानां दीनानां कृतागशां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोऽपि तेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरा क्रुद्धो भगवान् लोकभावना हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रीन् शतपर्वधृक् दितिर्वाच पदं भगवता साक्षात् सुनाभोदारबाहुना आशासे पुत्र्योर्मह्यं सा क्रुद्धाद् ब्राह्मणाद् विभो न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्या प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमाना च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्य युतपुत्राणां भवितैका सतां मतः गास्यन्ति यद्यशा शुद्धं भगवद्यशा समं योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवा निर्वैराद्भिरात्मानं यक्षीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स सुदृग्भगवान् यस्य तोष्यते नन्ययादृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो मातां महिष्ठा प्रवृद्धभक्ता अनुभाविता स ये निवेश्य वैकुण्ठमिमं वियासति अलम्पटाशीलधरो गुणाकरो हृष्टा परर्धावितो दुःखितेषु अभूत शत्रुजगताशोकर्ता नैदाघिकं तापमिवोढु राजा अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव श्रीललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं मैत्रीवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्र ममोदत दितिर्भृशम् पुत्र्योश्च वधं कृष्णात् विदित्वा सीन्महामनं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे दिति कश्यप संवादे चतुर्दशोऽध्यायः भगवते वासुदेवाय अथ पंचदशोऽध्यायः मैत्री उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजात् परतेजोहनं दिति ददार्वर्षाणि शतं संक्मानासुरार्धनात् लोके तेनर्ता लोके लोकपालाः तौजसा निवेदन विश्वसृजेध्वान्तव्यतिकरं दिशां देवाऊचो तम एतद्विभो वेत्त संविघ्ना यद्वयं भृशं न हव्यक्तं भगवता कालेनास्पृष्टवर्त्मना देवदेव जगद्धातर्लोकनाथ शिखामणि परेषां त्वं भूतानामसि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुष गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परं सत्सदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जितस्वासेन्द्रियात्मनां लब्ध युष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवा यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्तेव यन्त्रिता हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः सत्तं विधत्स्वशम्भुमस्तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्र दया दृष्ट्या आपन्नानर्हसीक्षितुम् एष देवदितेर्गर्भ ओजा काश्यपमर्पितं दिशिस्तिमिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवै धसि मैत्रिवास प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरा प्रत्याचष्टात्म भोर्देवान् प्रीडन् रुचिरया गिराम्बरमोवाच मानसा मे सुतायुष्मत्पुरुजासनकादया चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्प्रिया त एकदा भगवत वैकुण्ठस्यामलात्मना येयुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुण्ठमूर्ता ये निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिं यत्र चाद्यापमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्तं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृदयन् भृशा यत्र न हि श्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्ध्रुमैः सर्वर्तु श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत् वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकसमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेन विक्षन् मधुं माधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः पारावतान्यभृतसारश्चक्रवाकदातुहंस सुकतितिरवर्धिनां या कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुरवोत् फलचम्पकार्ण पुन्नागनागबकुलाम्बुज
पारिजाता गन्धेर्चिते तुलसिका वर्णेन तस्या यस्मिन् तपास मनसो बहुमानयन्ति यस्सङ्कुलं हरिपदान्नतिमात्रदुष्टैर्वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभमुख्या कृष्णात्मनां नरज आदधुरुस्मयाद्यै श्रीरूपिणी कुणयति चरणारविन्दलीलाम्बुजेन हरिषद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिकगुड्डे उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहेणेन्ययत्नः वापीषु बिद्रुमतटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिः सम्यभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष वक्त्रमुक्षेषितं भगवते त्यमताङ्गयक्ष्री यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादक्षणवन्ति येन विषया कुक्तामतिग्नेयासु श्रुतात् भगैर्निविरात्तसारास्तास्तान् क्षिपन्त्यशरणेषु तमासु हन्त ये व्यर्थितामपि च नोग्नकृतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं स धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते यच्च व्रजन्तनिमि सा मृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणा स्पृणीयशीला भर्तुर्मितासु यस्सा कथयानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गा तद्विश्वगुरुवधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्रविमानशोची आपूपरां मुदमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठं तस्मिन्नतीत्य मुनया षड्सज्जमाना कक्षा समानवयसावत सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौपरार्ध केयूरुकुण्डलकिरीटविटङ्कवेशौ मत्तद्दुरेफ वनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये वक्त्रमुर्वाकुटलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ द्वार्येतयोर्निविशूर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकाया सर्वत्र ते विस्मया मुनया स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्तवेता विगताभिशङ्का तान् वीक्ष्य पातरसनाश्चतुरा कुमारान् वृन्दान् दशार्धवयसो विदितात्मसत्तत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयता मतदर्हणास्तौ तेजो यस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां मिषस्व निमिषेषु निषिध्यमाना स्वरहत्तमाय हेपिहरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचु सृहत्तमदिदृक्षितभङ्ग ईषत्कामानुजेन सहसा तौ पप्लुताक्षा मुनय ऊचु को वामयैति भगवत्परिचर्ययोच्चैस्तद्धर्मिणां निश्चितां विषमा स्वभावा तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मवत्कुहकयो परिशङ्कनीया न ह्यन्तरं भगवती ये समस्तकुक्षावात्मानमात्मन्नभो नभसीवधीरा पश्यन्ति यत्र विवोऽसुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं युदरभेदिभयं यतोष्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तो कर्तुं प्रकृष्टमे धीमहि मन्दधीभ्यां लोकानितो व्रजत मन्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय्य इमे रिपभोश्च यत्र तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डम निवारणमस्त्रपोगैः सद्यो हरे रनुचराबुरुबिभ्यतस्तत्पादग्रहाव पततामतिकातरेण भूयादघो निभगवद्भिरकारिदण्डो यो नौ हरेत सुरहेलनमय्यमप्यशेषम् मावोनुतापकलया भगवत्स्मृततिग्नो मोहो भवेदेतु नौ व्रजतो रथोधा एवं तदैव भगवानरविन्दनाभा स्वानां विबुद्ध सदतिक्रममार्य हृद्या तस्मिन् ययौ परमहंसमहामुनीनामन्वेषणीयचरणौ चलयन् सहस्री तं त्वागतं प्रतिहृतौ पैकं स्वपुंविस्ते चक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियोर्विजनयो शिववायुलोला शुभ्रातपत्रशशिकेसरसीकराम्बुं कृष्णप्रसादसुमुखं स्मरणीय धाम स्नेहावलोककलयार्धिसंस्पृशन्तं श्यामे प्रतापुरशोभितया श्रियास्वश्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यं पीतांशुके प्रतुनितं विनिविस्फुरन्त्या काञ्चालि विरविरुतया वनमालया च बल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तस्तमितरेण धुनानमब्जं विद्युत्क्षिपन् मकरकुण्डलमण्डनारगण्डस्थलोन्समुखं मणिमत्किरीटं दूर्दण्डसण्डविवरे हरतापरार्ध हारेण कन्दरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोस्मितिमिन्दिराया स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाड्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुरुनिरीक्षन् तृप्तदृशो मुदा कैतस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायु अन्तर्गतासु विवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो
ते वा अमुष्य वदनासित पद्मकोशा मुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधर कुन्दहासं लुब्धाशिषा पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रे द्वन्द्वं नका ऋणमणिश्रेणं निदध्युः पुंसां गतिं मृग यथा मे योगमार्गैर्ध्यानास्पदं बहु मतं नयनाभिरामं पौष्णं वपुर्दर्शयान्मनन्यसिद्धैरौत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः कुमारा ऊचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां तं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धा यद्येव कर्णविवरेण गुहां गतो न पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं तत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेनुतापविदितै दृढभक्तियोगैरुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागां नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते येङ्गत्तुदङ्घ्रिशरणा भवता कथाया कीर्तन्यतीर्थयस्सा कुशलारसज्ञा कामं भवासु वृजिनैर्निरयेषु नस्ताच्चेतो लिवद्यदिनुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसीवाद्यदितेऽङ्घ्रिशो वा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रा प्रादुश्चकर्त यदिदं पुरहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो न तस्माइदं भगवते नमयिद्विधेम यो नात्मना दुर्दयो भगवान् प्रतीतं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीय स्कन्धे जय विजयो सनकादिशापो नाम पंचदशोऽध्यायः। भगवते वासुदेवाय।